Hello friends, welcome back to Mission Nursing classes. Today we are going to discuss in this video about a big update. Now that most of nursing students are waiting for new recruitments in 2022 because that due to COVID-19 most of recruitments are holding, but now COVID-19 is over and COVID-19 severity is under control. So Jipmer Pondicherry has released a new vacancy for nursing officer recruitments, and so that we will discuss the complete details of this recruitment in this video, about qualification, about salary, about selection process, about how to get selection in this Jipmer for nursing officer recruitment. So don't skip this video, please watch this video till the end, so that you will get all authentic news, all strategy about this nursing officer recruitment. Because I was qualified, I was got selected in this recruitment, last 2018 recruitment of JIPMER with all India rank 5th rank. Okay, so I will share my experience with you how to get selection in this nursing officer recruitment, because you know that JIPMER's nursing officer recruitment is India's most toughest recruitment, India's most toughest exam. Okay, इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करूंगा. इंग्लिश लैंग्वेज साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज फॉर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स एंड हिंदी लैंग्वेज फॉर नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स. ओके, सो नाउ I can scroll down this PDF. If you want to this PDF, then you can just visit on official website jipmer.edu.in. You will get this official PDF, complete detailed advertisement PDF you will get from the official website. Okay, website is there www.jipmer.edu.in. अगर आपको PDF चाहिए तो आप वेबसाइट पर विजिट करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी. ये कंप्लीट ऑथेंटिक न्यूज़ है, मैंने काफ़ी जगह ट्राई भी कर लिया और वेबसाइट से ये लिंक डाउनलोड, ये PDF डाउनलोड किया है. ठीक है, अगर आपको इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज दिस अबाउट दिस रिक्रूटमेंट, देन यू जस्ट कॉल टू दिस कॉन्टैक्ट नंबर एंड मेल टू दिस मेल एड्रेस, एंड इफ एनी अदर also you can just send this address if any queries, if you have any queries ना. ठीक है, first of all you just let's see, candidates are advised not to send hard copy of the applications with documents by postal courier by hand. Candidates are also advised to keep the soft copy of the applications and hold tickets for further future reference. इसका मतलब ये है कि आपको फॉर्म भरने के बाद में आपका एप्लीकेशन कहीं पर भी फॉरवर्ड नहीं करना, अपने पास ही उसकी कॉपी रखना है, वो आपको आगे काम आएगा. हॉल टिकट की भी कॉपी रखनी है, सब कुछ आपको जमा करके अपने पास रखना है. ठीक है, important we will now we will discuss important dates of this recruitment. Online registration will be started on 10 March. Okay, online registration for application last date for this recruitment is 30 March. Okay, last date is 30 March, but you don't wait for last date. You should apply your application as soon as possible, whenever application process has been started. Okay, will be start whenever application process will be started, you should apply your application as soon as possible, because in the last dates, in the last days, most of time websites is not working properly, so you don't wait last date ना. Okay, आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर देना है. ठीक है, हॉल टिकट्स फॉर योर एग्जाम यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दिस वेबसाइट फ्रॉम 11 अप्रैल 2022. ओके, आपको अपने एडमिट कार्ड 11 अप्रैल से मिलने स्टार्ट हो जाएंगे. डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो देखिए 17 अप्रैल को इसका एग्जाम प्रस्तावित है, अपना जो नर्सिंग ऑफिसर का. ओके, अदर पोस्ट का आप देख सकते हो, बाकी अपन बात करते हैं नर्सिंग ऑफिसर की. डेट ऑफ एग्जाम इज शेड्यूल्ड ऑन 17 अप्रैल 2022. ओके, सो यू not have any you have short time, just start your preparation. Okay, and best books for JIPMER nursing officer exam, you know that first of all nursing officer you should think nursing officer exam of JIPMER is most toughest exam, so you should make a strategy, a short strategy how to get selection.
you just prioritize your subjects, weak subjects you should focus on first on them, and your strong subject you keep in later stage na. First of all, you just clear all theoretical portion, okay, and you should get all the previous year paper of JIPMER and Crackle, because if you get all previous year paper, you know about the JIPMER syllabus, about the JIPMER exam pattern, okay, and you know that we have collected all the papers in a single title. This title name, this book name, Mission Old Papers 2.0 now just has released 2. Yani second edition 2022. So if you want all previous year paper, then you just visit Amazon, Flipkart, and डायरेक्ट फ्रॉम पब्लिशर वेबसाइट www.missionhighpublication.com. देखिए, आपको अगर पूरे पुराने पेपर चाहिए जिपमर के, चाहे ESIC, DSSB, RRB, तो आप पुराने पेपर मिशन ओल्ड पेपर बुक से प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पर भी आसानी से मिल जाएगी, या डायरेक्ट आप पब्लिशर से ऑर्डर कर सकते हो इफ़ यू वांट एक्स्ट्रा डिस्काउंट. ओके, क्लियर. मिशन परिचारिका इज थ्योरी बुक है. इट इंक्लूडेड ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स थ्योरी, ओके, in which all conceptual, all theoretical, all clinical based content are included. And okay, if you want sample PDF of all books, then you just send a WhatsApp message to this number. Otherwise, all sample PDFs, books link also available in this video's description box. You just find from there, you just got from there and watch PDF, sample PDF. If you wish, then you can buy from Amazon, Flipkart, or if you want in extra discount, then you just send, you just order through publication. Okay, now one more thing I want to discuss. There is a skill test also is there. ओके, स्किल टेस्ट आल्सो, इसमें स्किल टेस्ट भी होगा, लेकिन वो बाद में होगा, उसके जो भी प्लानिंग होगी वो बाद में अनाउंस होगी. ठीक है. ठीक है. इसके बाद में आगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपसे डिस्कस करूँ. देखिए, नर्सिंग ऑफिस की टोटल पोस्ट आर देयर. टोटल पोस्ट इज 106, 52 अनरिजर्व्ड, 13 EWS, 20 OBC एंड 10 SC एंड 11 ST. ओके, ओवरऑल टोटल वैकेंसी इज 106 इज देयर. ओके, इट्स बिग वैकेंसी, बिग रिक्रूटमेंट, नॉट ए स्मॉल रिक्रूटमेंट. 106 वैकेंसी इज also big recruitment. Okay, so don't focus on number of posts. It's enough. You want only you will get one post. Okay, so just focus on your preparation. Don't focus on total number of posts. ओके, आपको कोई बड़ा ऐसी 1500 वैकेंसी नहीं मिलेगी. जो इतनी ही वैकेंसी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और ये कम नहीं होती. हमने भी जब 2018 में एग्ज़ाम दिया था तब हमारे सामने 93 पोस्ट थी, सॉरी 91 पोस्ट थी, और उसमें भी हमने AIR 5th रैंक से क्वालिफाई किया था, और वहाँ पर 1.5 साल जॉब भी करके आए हैं. One more thing I want to discuss with you. This is very disappointed. This is very sad and very bad news for all boys candidates. Those are preparing for nursing officer exams, and this is as per decision of the JIPMER governing body. 80% post of the nursing officers are for female candidates and 24% seat for male candidates. Yes, 80-20 reservation also implemented in JIPMER nursing officer recruitment. So it is very disappointed for all nursing officer, for all male nursing students, those want to get seat in nursing office in JIPMER. Okay, तो देखिए 80-20 का है जो यहाँ पर भी लग चुका है JIPMER में भी. हालांकि SLP केस ऑलरेडी अंडर सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग. Okay, but JIPMER also implemented this black rule. So, but you have 20% seats chance na, so don't worry, don't be stressed. You just try and just focus on your preparation. You will get surely a seat na. Next one I want to discuss about qualification. Qualification is there. Nursing officer degree and diploma in general nursing and midwifery equivalent for from a recognized university institution, registered as nurse and midwife with under nursing council, Indian nursing council or any state nursing council, so that all India candidates are eligible. No any
experience. Fresher candidates also eligible. GNM, BSc, MSc, all candidates are eligible. Okay, so this is big recruitment. This is big recruitment for freshers, because most of freshers candidates, most of vacancies now years, most of vacancies coming with the experience, so that most of fresher candidates not included, not applied to post है ना. So देखिए इसमें GNM, BSc पोस्ट वैसे सब एलिजिबल है. ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल है इंडियन नर्सिंग काउंसिल जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है. ओके, सो ये बहुत बड़ा आपके लिए अपॉर्चुनिटी है. इसके बाद में अदर पोस्ट की अपन बात नहीं करेंगे. आई जस्ट स्क्रॉल डाउन दिस PDF. नाउ देयर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, देयर इज I want to discuss about scheme of examination. There is a written test, computer based test, and skill test is there na, will be there. Okay, so written test will be conducted in all India cities, most of all India cities. Okay, and scheme of examination for nursing officer post related 70% weightage will be asked from nursing subjects. 70% MCQs will be come from nursing officers. देखिए 100 MCQs is there, will be there, 100 MCQs will be there, and 70% MCQs यानी कि 70 MCQs will come from nursing subjects, and 30% यानी कि 30 MCQs will come from GK, maths, reasoning, and science, like that na. 90 minutes you will get 90 minutes for exam. Okay, for nursing subjects I already discussed about nursing subjects, which book you can prepare. Mission Paricharika book. This book have all theory, all subjects, all nursing subjects theory. Second one, Mission Old Papers. This book have all previous year papers including Jipmer, Pondicherry, Crackle 2018, Jipmer 2016, 19, 20, all papers are there na. So if you want to buy, then buy from Amazon, Flipkart, or direct from publisher. And I also share with you, if you want non-tech subjects book, because there is 30% weightage for non-tech subject in general knowledge, general intelligence, in GK, maths, reasoning, general English. Okay, so if you want non-tech book, Mission non-tech book also available. So if you want to buy, then visit Amazon, Flipkart. But I want to say one thing, but this book in Hindi and English language. So just to sure, if you know Hindi language, then you should buy. Otherwise, don't buy this book. Because this book have Hindi and English language. Another books, Mission Paricharika, Mission Old Paper, all books have English language. Okay. आप देखिए बुक मंगवा सकते हो. मिशन परिचारिका में कंप्लीट थ्योरी है. मिशन ओल्ड पेपर में प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे. दोनों की लैंग्वेज इंग्लिश है. और नॉन टेक जो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट है उसके लिए बेटर है कि मैथ और इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश में मिक्स में है. ठीक है, सभी बुक्स अमेजन, फ्लिपकार्ट और अवेलेबल है. डायरेक्ट अगर आप हमारे वेबसाइट से बाई करना चाहते हो एक्स्ट्रा डिस्काउंट डायरेक्ट पब्लिक सर से, तो वहाँ से भी आप बाई कर सकते हो. देखिए इसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का देर इज स्किल टेस्ट आल्सो इज देर ना. सो फॉर नर्सिंग ऑफिसर द स्किल असेसमेंट टेस्ट फॉर अबव पोस्ट इज क्वालिफाइंग नेचर. 4 to 8 स्टेशन विल बी क्रिएटेड टू इवैल्यूएट द स्किल बेस्ड परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन वेरियस प्रोसीजर इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, एंड लेटर आई विल अपलोड ए न्यू वीडियो अबाउट स्किल टेस्ट एग्जाम. ओके, नाउ ओनली दिस वीडियो. There is a minimum qualifying marks also scheduled. If you belong to general or EWS category, for eligibility for skill test you should get 50% marks. General, EWS, PWD candidates 45 marks, and SC, ST, OBC 40% marks should get in written test for qualify to next step like skill test. Okay. In skill test also qualifying marks is there, 50% you should get for next step. Okay. There is age relaxation for 5 years, SC, OBC 3 years. Okay. Before applying the your application, you should read all the conditions in this PDF. Okay. There is a 4 post for EWD candidates also is there na. 4 post for PWD candidates, benchmark disability candidates. Okay.
बिफोर अप्लाइंग द एग्जाम यू शुड रीड ऑल द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट दिस PDF है ना. देयर इज फीस फॉर जनरल कैटेगरी 15,500 रुपीज़ एंड OBC कैंडिडेट 1,500 रुपीज़ एंड SC/ST कैंडिडेट्स 1,200 रुपीज़. ओके, PWD कैंडिडेट्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फीस. there is all details is there for how to apply online application form. So you should read all the instructions before applying the application form. Okay, I just discussed about important things. Okay, so don't worry, this is a most toughest exam, but if you have confidence, if you have better preparation, if you have good preparation, then you should get you will get a seat in JIPMER. Okay, JIPMER is a prime institute of the India. It holding a most of rank in all over India. Okay, so just आज से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए. जो मानकर चलिए यू हैव ए शॉर्ट टाइम, ओनली 2 months इज देयर फॉर द एग्ज़ाम, है ना. ओके, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में. और वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस अबाउट दिस. इफ़ यू वांट टू जॉइन टेस्ट सीरीज फॉर JIPMER नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम, then you should visit on our website www.missionhighnurses.com. There we will upload test series for JIPMER nursing officer exam according to JIPMER nursing officer syllabus. Okay, for your better preparation, if you want, then you should join test series. If you have any queries about this recruitment, about books, about test series, you just send a WhatsApp message to this number 790000426. ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज.